Hello students, welcome to all in social science class. Dear students, in previous module we have discussed about the Lodi dynasty. So today in this module we are going to discuss about governance during the Sultanate period and their society, economy, religion, language, literature, art and architecture. So let's start with society. If we talk about the Indian society during the Sultanate period, the society was divided into two classes, that is Hindus and Muslims. Muslims were the ruling class and were divided into two sects, Sunni and Shia. During Sultanate period, slavery became very popular and it is said that Firoz Tughlaq had 1,80,000 slaves under his control. So my dear students, Sultanate period के time Indian society two classes में divided थी, Hindus and Muslims. Muslims ruling class थे, means Muslim उस time rulers थे और उन्हें दो संप्रदाय में डिवाइड किया गया था, सुन्नी और शिया. सल्तनत पीरियड में स्लेवरी सिस्टम बहुत ही पॉपुलर था, मीन्स दासता बहुत ज़्यादा थी. आई मीन टू से उस टाइम दास प्रथा प्रचलित थी, लोगों को दास बनाकर रखा जाता था. कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के कंट्रोल में 1,80,000 स्लेव्स थे. Dear students, if we talk about the condition of women, then we can say that the condition of women was not good during Sultanate period. Polygamy was common in Muslims and they kept more than one wife. Muslim widows were allowed to remarry, but in Hindu society, widow remarriage was not allowed. So, we can say that in both Hindus and Muslims, the condition of women was quite miserable. So students, सल्तनत पीरियड में वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी. पोलीगेमी यानी एक से ज़्यादा मैरिज मुस्लिम में कॉमन सी बात थी, वो एक से ज़्यादा वाइफ्स रखते थे. एक और बात, मुस्लिम विडोज को तो दोबारा मैरिज करने की परमिशन थी, बट हिंदू सोसाइटी में विधवाओं को रीमैरिज करने की परमिशन नहीं थी. मीन्स सल्तनत पीरियड में वुमेन की कंडीशन बहुत दयनीय थी. Hindus were in majority in the country but were economically very backward. Hindus were not given high post in Sultanate period. Hindu society were based on caste system. The people of lower classes were overlooked and exploited both by the higher classes of Hindus and Muslims. कंट्री में बेटा हिंदूज मेजॉरिटी में थे बट इकोनॉमिकली उनकी पोजीशन बहुत बैकवर्ड थी. मीन्स हिंदू लोग पिछड़े हुए थे, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे. हिंदूज को सल्तनत पीरियड में कोई हाई पोस्ट भी प्रोवाइड नहीं की गई थी और हिंदू सोसाइटी कास्ट सिस्टम पर बेस्ड थी, यानी सोसाइटी डिफरेंट कास्ट में डिवाइडेड थी. लोअर क्लासेस अर्थात निम्न वर्ग के लोगों को हिंदूज एंड मुस्लिम की हायर क्लासेस के लोगों ने अनदेखा किया और उनका शोषण किया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट हिंदूज वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड वर नॉट रिस्पेक्टेड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. दिस लेड टू वाइड स्प्रेड कन्वर्जन टू इस्लाम. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट a large number of Hindus changed their religion and become Muslims. Hindu society was suffering from many social evils like sati system, means the woman whose husband was died have to burn himself alive along with her husband. Child marriage was common. Widows were not allowed to remarriage. Even women and girls were not allowed to get education. Intercaste marriages were also not allowed because of caste rigidity. You know बेटा, हिंदूज इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी और सल्तनत पीरियड में उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी, उनका कोई सम्मान नहीं था.
इस वजह से हिंदूज जो हैं वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने लगे। मीन्स बहुत से हिंदू लोगों ने अपना धर्म बदल लिया और मुसलमान बन गए। हिंदू सोसाइटी में कई सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयां भी थी, जैसे कि सती सिस्टम। सती सिस्टम का मतलब उन वुमेन से है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उन्हें अपने हस्बैंड के साथ साथ खुद को भी जिंदा जलना पड़ता था। विडोज यानी विधवाओं को रीमैरिज करने की परमिशन नहीं थी। कास्ट रिजिडिटी यानी जातिगत कठोरता के कारण इंटरकास्ट मैरिज को भी अलाउ नहीं किया जाता था। Dear students, let's discuss the economy and economic condition of the people. If we talk about the economic condition of the people, then we can say that particularly Hindus were economically backward, as I have told you that they were not given high post and overlooked by the rich Muslims. Most of the people practiced agriculture, and agriculture was mainly dependent on rain. However, canals and wells were used for irrigation. Muslim ruler Firoz Tughlaq constructed many canals for irrigation, which proved helpful for agriculture. In spite of all these efforts, the farmers led a life of misery. They were living in poverty. सो बेटा, सल्तनत पीरियड में मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर करते थे और एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर मेनली रेन पर डिपेंडेंट थी। हालांकि कैनाल्स एंड वेल्स का यूज़ इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक जो कि एक मुस्लिम रूलर था, उसने इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए नहरें बनवाई जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। इन सभी एफर्ट्स के बावजूद भी फार्मर्स की कंडीशन बहुत दयनीय थी और वो गरीबी का जीवन जी रहे थे। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, देन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वर स्पिनिंग, वीविंग, sugar production, handicraft, pottery and jewelry making etc. Dear students, there were some sultans who patronized art and craft, means they provided grants and aid for the development of art and craft. Sultans had their own karkhanas. The fancy and luxury goods were manufactured for the royal family. During this period, India had advanced internal and foreign trade. Trade was carried on by both sea and land routes. The main items of exports were rice, spices, indigo, textiles, silk and sandalwood. India imported horses, wine, high-grade textiles, glassware and raw silk during सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में बेटा कई सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट को संरक्षित किया। आर्ट एंड क्राफ्ट को इम्पोर्टेंस दी गई। मीन्स सुल्तान्स आर्ट एंड क्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए अनुदान और सहायता प्रदान करते थे। सुल्तान के पास अपने खुद के कारखाने थे जो रॉयल फैमिलीज के लिए फैंसी और लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चर करवाते थे। मीन्स ब्यूटीफुल, मॉडर्न एंड ऐशोआराम की चीज़ें बनवाते थे। इस टाइम में इंडिया का इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड काफ़ी एडवांस था। मीन्स देश के अंदर भी और दूसरे देशों के साथ ट्रेड काफ़ी फल फूल रहा था। ट्रेड सी रूट्स और लैंड रूट्स दोनों ही रूट्स के थ्रू किया जाता था। एक्सपोर्ट्स की आइटम्स राइस, स्पाइसेस यानी मसाले, इंडिगो मीन्स नील जो कपड़ों को वाइटनर करने के लिए यूज़ होता है, टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़ा उद्योग, सिल्क और सैंडलवुड यानी चंदन एटसेट्रा। इन सभी आइटम्स का जो है निर्यात इंडिया जो है उनका निर्यात करता था। मीन्स दूसरे देशों को गुड्स भेजता था। और हॉर्सेस, वाइन, हाई क्वालिटी क्लोथ्स, कांच से बनी हुई गुड्स और रॉ सिल्क का भी आयात करता था। मीन्स वो दूसरी कंट्री से मंगवाता था। इंपोर्ट्स मीन मंगवाना। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट रिलीजन during Sultanate period. During this period, Hinduism was the dominant religion.
as Hindus were in majority. The Hindus followed Vaishnavism and Shaivism. Some Hindus also followed Jainism and Buddhism. Mahmud Ghazni and Mahmud Ghori brought Islam in India. The Muslim believed in one god, whereas Hindus worshipped many gods. Some of the important movements like Bhakti movement and Sufism started during Sultanate period. So dear students, सल्तनत पीरियड में हिंदुइज्म एक डोमिनेंट रिलीजन था, यानी हिंदू धर्म का प्रभुत्व था, क्योंकि हिंदुओं की मेजॉरिटी थी और यू कैन से हिंदुओं की संख्या उस टाइम ज़्यादा थी. हिंदूज ने वैष्णविज्म और शैविज्म को फॉलो किया. मीन्स वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते थे. बट कुछ हिंदूज ने जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी फॉलो किया. फिर महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी ने इंडिया में इस्लाम धर्म को फैलाया. मुस्लिम्स एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, मीन्स दे बिलीव्ड इन वन गॉड. बट हिंदूज कई देवी देवताओं की पूजा करते थे. सल्तनत पीरियड में भक्ति एंड सूफी कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुए. स्टूडेंट्स, let's talk about the language and literature. If we talk about the language during Sultanate period, then the literary language for prose and poetry was Khadi Boli and Braj Bhasha. Prose and poetries were written in these languages. If we talk about the Muslim communities, then the Muslims used a mixture of Persian and Arabic language in their court. One of the most important contribution of Sultanate period was the introduction of historical literature. Means the histories began to be written. बेटा, प्रोज एंड पोइट्री यानी गद्य और कविता के लिए लिटरेरी लैंग्वेजेस खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी. इन्हीं लैंग्वेजेस में गद्य और कविताएं लिखी गई. मुस्लिम कम्युनिटीज़ अपने दरबार में, अपने कोर्ट में पर्शियन और अरेबिक दोनों ही लैंग्वेजेस बोलते थे. इट मीन्स पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज का मिक्सचर. सल्तनत पीरियड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन किया था बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर. डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड हिस्ट्री ऑफ रूलर्स बिगेन टू बी रिटन. अ फेमस हिस्टोरियंस जियाउद्दीन बर्नी wrote Tariq-e-Firuz Shahi. The well-known literary figure and most genius of this period was Amir Khusro. He was an outstanding poet as well as music composer and great historian. So बेटा, सल्तनत पीरियड के टाइम रूलर्स की हिस्ट्री भी लिखी जाने लगी थी. फॉर एग्जाम्पल, एक फेमस हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक-ए-फिरोज शाही लिखी. स्टूडेंट्स, इस टाइम के सबसे फेमस साहित्यकार यानी लिटरेरी फिगर और सबसे प्रतिभाशाली पर्सन अमीर खुसरो थे. अमीर खुसरो एक अच्छे पोएट होने के साथ साथ एक संगीतकार और महान इतिहासकार भी थे. डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड द लोकल लैंग्वेजेस बंगाली एंड गुजराती वर यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. Local language were the medium of preachings for bhakti and Sufi saints. A new language was also developed during this period, which was a mixture of Turkish and Hindi. What was that language? It was Urdu. Many great Indian classics were translated in Persian, Turkish and other languages. बेटा, सल्तनत पीरियड में इंडिया के कई पार्ट्स में बंगाली और गुजराती लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था. लोकल लैंग्वेज भक्ति और सूफी संतों के प्रचार का माध्यम थी. इस टाइम में एक नई लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस की गई और वो लैंग्वेज थी उर्दू. कई ग्रेट इंडियन क्लासिक्स जो कि पर्शियन, टर्किश और कई दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू गेट नॉलेज अबाउट art and architecture during Sultanate period. During this period, a new style of architecture was developed with the help of Indian craftsmen. This is known as
Indo-Islamic architecture. The monuments that were built during this period has a clear impact of it. So my dear students, सल्तनत पीरियड में इंडियन क्राफ्ट्समैन की हेल्प से आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला का एक नया स्टाइल डेवलप किया गया. इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है. इस पीरियड के टाइम जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उनका स्पष्ट प्रभाव आप देख सकते हो, जिसमें इंडियन और इस्लामिक दोनों ही कलाओं का मिश्रण है. इफ वी टॉक अबाउट द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, देन क्वैत उल इस्लाम मॉस्क, that is Qutubi Masjid, and Qutub Minar in Delhi are the best examples of Indo-Islamic architecture. These were made by the first Sultan of Delhi Sultanate, Qutbuddin Aibak. He died in his young age. So Qutub Minar was completed by Iltutmish. So बेटा क्वैत उल इस्लाम, जिसे कुतुबी मस्जिद भी कहते हैं, और दिल्ली में कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं. मीन्स जिसमें इंडियन और इस्लामिक दोनों ही कल्चर मिक्स्ड हैं. कुतुबी मस्जिद और कुतुब मीनार ये दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू बनवाए गए थे. बेटा उनकी यंग एज में ही डेथ हो गई थी, मीन्स छोटी सी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी. तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के थ्रू कंप्लीट किया गया. Alauddin Khilji extended the Quwait ul Islam mosque and built Alai Darwaja near it. It is very decorative and most impressive gateway with an arc. So Alauddin Khilji ने बेटा कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया और इसके पास ही अलाई दरवाज़ा बनवाया. यह एक आर्क के साथ साथ यानी गुंबद के साथ ही एक बहुत ही डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे यानी प्रवेश द्वार है. डियर स्टूडेंट्स, खलजी वांटेड टू बिल्ड अ मीनार इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार ऑफ इट्स डबल हाइट, बट ही कुड नॉट complete his task. Do you know why? As he died at a young age, his dream could not fulfill. The incomplete construction of Minar can be seen today. You can see half mosque. Dear students, during Sultanate period, many cities were founded by the rulers. Tughlaqs founded many new cities like Firozshah Kotla, Firozabad and Tughlaqabad. The most important and famous monument of Tughlaqs is the Ghiyasuddin Tughlaq tomb. It is octagon in shape, that is it has 8-sided. This tomb is in front of Tughlaqabad fort of South Delhi on Mehroli Okhla road. So dear students, सल्तनत पीरियड में कई सिटीज़ की एस्टेब्लिशमेंट रूलर्स के थ्रू की गई थी. तुगलकों ने कई न्यू सिटीज़ जैसे कि फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद और तुगलकाबाद की स्थापना की. तुगलक का मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस मोन्यूमेंट गियासुद्दीन तुगलक टॉम्ब है. यह ऑक्टागन शेप में है, मीन्स इसकी 8 साइड्स हैं. यह टॉम्ब यानी मकबरा मेहरोली ओखला रोड पर साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद फोर्ट के सामने है. Students, if you got a chance to visit Delhi, then please see these monuments like Qutub Minar, Red Fort, Tughlaqabad and Tomb of Ghiyasuddin Tughlaq. This will enrich your knowledge about the rulers of Sultanate period, and you will also get acquainted with the architecture styles of Sultanate period. Dear students, while visiting Delhi on Lodi Road, you can see the Lodi Gardens. These gardens were made by the Lodhis, who were the last rulers of Delhi Sultanate. So dear students, today in this module we have got acquainted with vast knowledge of society, economy, religion, language and literature, art and architecture of Delhi Sultanate. When we actually visit Delhi and see all monuments in Delhi,
then definitely it will be a great experience for us related to our history, and we can explore much more visiting such historical places in our capital city Delhi. So, with this, our chapter ends. Thank you. Stay blessed and stay happy. Bye bye.